Before 1997, right? A person, means a woman, facing sexual harassment at a workplace had to lodge a complaint under the section 354 of IPC, that is Indian Penal Code 1860, that deals with the criminal assault of women to outrage women's dignity. It means, session will be in Hindi and English both. It means 1997 से पहले, राइट? क्योंकि वो विशाखा केस 1997 में है. उससे पहले अगर इन केस ऐसा कोई इश्यू है, then in case female woman had to lodge a complaint under IPC section 354. उससे पहले अगर कोई ऐसा गाइडलाइंस एक्ट नहीं था. It is overview of the act and before that, and section 509 that punish an individual or individuals for using a word, gesture or act intended to insult the dignity of a woman, right? And again same 509 section के अंडर में कंप्लेन कर सकते थे in case if this issue happens. Next, during the 1990s, the state government, that Rajasthan, right? Employee name was Pauri Devi, who tried to prevent child marriage as a part of her duties as a worker of the Women Development Program, was raped by the landlords of the Gujar community. And the old-fashioned father, who were angry by her, decided to teach her the lesson and rape her repeatedly. उस टाइम पे ये हुआ था 1990s में. जो फीमेल एम्प्लॉय थे उनको कुछ सबक सिखाने के लिए, वो अच्छा काम कर रहे थे क्योंकि राजस्थान में एज यू ऑल नो, बट स्टिल उनको प्रिवेंट करने के लिए, चाइल्ड मैरिज प्रिवेंट करने के लिए वहां पे काम कर रहे थे और वो प्रॉपरली काम कर रहे थे. अपना जो ड्यूटी थे वो प्रॉपरली कर रहे थे. इन दैट केस द पर्सन रेप हर repeatedly, and the rape survivor did not get justice from the Rajasthan High Court, and the rapist was allowed to go free. उनको justice नहीं मिला राजस्थान हाई कोर्ट से भी. Then the women's rights group called Vishakha that filed public interest litigation in the Supreme Court of India, and 1990 जो था 7 उस टाइम पे उन्होंने ये फाइल किया PIL, that is from Vishakha, कि ऐसा एक केस है. एंड वो केस चला लास्ट में. नेक्स्ट, द केस विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. क्या हुआ था उसमें? 1997 में सुप्रीम कोर्ट पास्ड लैंडमार्क जजमेंट इन द सेम विशाखा केस, laying down guidelines to be followed by establishments in dealing with complaints about sexual harassment. That was Visakha guidelines, was stipulated by the Supreme Court of India in Visakha and others versus State of Rajasthan case of 1997 regarding sexual harassment at the workplace. And court stated, that Supreme Court, that these guidelines were to be implemented until the legislation is passed to deal with this issue. 1997 में ये विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया हमें, राइट? बट उसके बाद ये एक्ट बनते बनते, दैट इज सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट बनते बनते 16 साल निकल गए हमारे. दैट इज इन 2013. 2013 में एक्ट आया ना. So it is long process, as we all know. So this was about the basic. Next, about the act, what act is saying to all of us. Just a minute. Question answer in last. I will have the question answer session. Please wait. Session will be in Hindi and English both. Again, I am repeating. The act extend to whole of India. पूरे इंडिया के सभी स्टेट में एप्लीकेबल है. Every employee is required to constitute an ICC, that is internal complaints committee at each office or branch with 10 or more employees. तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? Where company or branch
whatever has 10 or more employees, then they need to constitute ICC, that is internal complaint committee. And below 10 employee hai to the district officer is required to constitute a committee called LCC, that is local complaint committee, in the district to receive complaints of sexual harassment from establishment where the internal complaint committee has not been constituted due to having less than 10 workers, and or if complaint is against the employer himself, right? अगर 10 से कम एम्प्लॉई है और एल्स एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में कंप्लेन है, देन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को यहाँ पे LCC, दैट इज लोकल कंप्लेंट कमिटी बनानी रहेगी. ओके, नेक्स्ट वन. Okay, there are many definitions in the act, but we will mainly focus on aggrieved woman, that is injured or harmed in normal word. In relation to workplace, a woman of any age, whether employed or not, please remember, who claims have been subjected to any act of sexual harassment by respondent. In relation to a dwelling, that means lodging place or a house, woman of any age who is employed in such a dwelling place or house. कौन कौन कवर होंगे यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल, फीमेल एम्प्लॉई चाहे कंपनी में काम कर रहे, चाहे आपने इनकेस पीजी गेस्ट हाउस, राइट, वैसे भी जगह पे काम करते मे बी, या थर्ड पार्टी पे पे काम कर रहे, और इनकेस आपने किसी को यहाँ पे बुलाया है, से फॉर एग्जांपल कोई आपके सेमिनार है या कोई ट्रेनर आपने बुलाए हुए, व्हाटएवर केसेस, एवरीवन विल बी इंक्लूडेड इनटू अग्रीड वुमन. मतलब वो सब अगर कंप्लेन करते हैं देन दे आर अग्रीड वुमन, राइट. और इन केस हमारा जो एम्प्लॉई है, मतलब फीमेल एम्प्लॉई, इफ शी इज ट्रैवलिंग एंड वहां पे कुछ उनको होता है, देन अगेन दे आर कवर्ड. ऐसा नहीं कि खाली कंपनी में जो है वही कवर होंगे. एक्ट इज टेलिंग, जो एक्ट है ना 2013, वो कह रहे हैं कि चाहे फीमेल एम्प्लॉय हमारी कंपनी में है या नहीं है, आउटसाइडर भी है या हमारे एम्प्लॉय कहीं जाके काम भी कर रहे हैं, इन सेम केस ऑल विल बी कवर्ड, राइट. सो ये किस लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? मैम ने बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझाया, जो प्रॉपर्ली गाइड किया, उसी को ध्यान में रखते हुए, और ये लेबर लॉ दैट इज सेक्सुअल हरेसमेंट, उसको ध्यान में रखते हुए यू कैन मेक अ पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी हम बता सकते हैं, राइट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. ओके, हाउ टू कॉन्स्टिट्यूट, that is ICC, internal complaints committee, right, where 10 or more workers are working. वहां पे ऐसा नहीं बोला गया कि मेल हो या फीमेल, right. There will be the member that are 4 members minimum. The chairperson shall be women, मतलब female, employed at a senior level amongst the all employees. वहां पे जो सीनियर हो ना, उनको फर्स्ट चेयरपर्सन रखना है हमें. 2 members shall be amongst employees preferably committed to the cause of women, experience in social work, have a legal knowledge. 2 member ऐसे रखना है. And 1 member amongst the NGO association committed to the cause of women, person familiar with the issues related to the sexual harassment. एक NGO और लोकल जो इश्यू है वुमेन के, उनसे रिलेटेड एक पर्सन को वहां पे रखना है. तो 4 पर्सन, टोटल 4 पर्सन वी हैव. जस्ट अ मिनट, I think we can stop the chat as of now. Ma'am, you continue. Sorry. At last, we will have the question answer session. Na? We will both be available because it will be disturbing to me as well. Hope you can understand. And I'm here. अगर 30 मिनट के टाइम से नहीं भी होता ना, then we'll continue with the next 30-minute session. Don't worry. We will clear your doubts. Please give me some time. Thank you so much. This was about ICC. And next, about the LCC, that is local complaint committee, where 10 से कम employees है, or else employees का again में case है, that section 7 of the act provides that LCC is have to minimum 5 members. It means total 5 member वहाँ पे होने चाहिए, and 4 members जो है वो कंपनी की ओर से, and 1 that will be district officer.
that will be default member. वो default रहेंगे. One chairperson nominated from the among well-known women in the field of the social work and committed to the cause of women, जिन्होंने handle किए हो, जो well-known हो social work में, वो chairperson रहेंगे. One member nominated from the among of the women working in the block, तालुका, तहसील or a ward or municipality in the district, वहां से एक member को आपको लेना है. Two members nominated, out of which at least one should be from the NGOs or the association of committed to the cause of women or a person familiar with the issue relating to the sexual harassment. दो member आप ऐसे ले सकते हैं. And last one जो district officer आपके हैं, he or she is handling social welfare or women and child development, जो district में होंगे ना, they are, you have to continue with them and they will be default member of the LCC. You can contribute to LCC and ICC like this. Okay, next one, how to proceed with the complaint. जैसे मैम ने आपको बताया कि ये हो सकता है या that will be issue and favor promotion के लिए आपसे whatever, that are much more things. So how to proceed for the complaint file. A complaint on sexual harassment at the workplace must be made by the aggrieved woman within the period of 3 months from the date of occurrence of an incident. Within the 3 months, a female employee or a particular aggrieved woman needs to file. In case of series of incident, continuous, then within the period of 3 months from the last date of incident. Last incident जब हुआ था उससे 3 महीने के अंदर complete कर देना. The complaint must be made in written, means in writing, and submitted to the ICC, and it could be sent by the courier or given in person. अगर वो नहीं आना चाहते, काफी ऐसे केसेस हैं, अगर वो नहीं आ सकते, in that case the courier से भी they can send. The ICC also has the power to extend the time limit for the reporting by not more than 3 months if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the employee from filing a complaint within the 3 months of period. मतलब कि जो फीमेल एम्प्लॉई है, जो फीमेल है, अगर वो 3 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, इन दैट केस 3 मंथ्स मोर उनको आईसीसी दे सकते हैं अगर इश्यू है कोई. बट दैट इज टोटल 6 मंथ्स. बट हम क्यों वेट करें 6 महीने तक? अगर पता चला तो एचआर नीड टू टेक एक्शन इमीडिएटली, सो देयर विल बी नो एनी लेट. ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं. इफ यू हर्ड अबाउट मी टू, राइट, 2018 में स्टार्ट हुआ था एंड दैट वाज स्टार्टेड बाय तनुश्री दत्ता एंड वाज कंप्लेंट अगेंस्ट दी नाना पाटेकर. राइट, उसके बाद बहुत सारे केसेस हुए. नेक्स्ट वन, हाउ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड. कंप्लेंट कैसे फाइल कर सकते हैं? If an aggrieved woman is unable to make a written complaint by herself or on account of her physically incapacity, physically नहीं आ सकते, then her relative or friend, co-worker, officer of the National Commission for Women or State Women Commission, any person who has knowledge of the incident and with written consent of the aggrieved woman. अगर in case female employee जो female है, जो aggrieved woman हम बोलते हैं in the law language, वो physically capable नहीं है, in that case इसमें से कोई भी complaint कर सकते हैं, but the written consent उनका होना चाहिए. And in case same but mentally incapacity है, दोनों तरह से हो सकता है. Same relative, special educator, अगर उन्होंने कोई ऐसे psychiatrist और psychologist रखे हैं, guardian और authority under who carries their treatment उनका जो चलता है, और person who has knowledge of the incident by jointly requested and qualified psychiatrist or guardian or authority, same, वो सब दे सकते हैं कंप्लेंट. To whom? To ICC or to LCC. And finally, if an aggrieved woman is unable to make written complaint by herself on account of her mental capacity or physical capacity or death case, in case of death, तो उनके जो लीगल है फैमिली में से कोई भी दे सकते हैं. राइट, सो
This was about the how to make a complaint and what are the timelines. Next, what is the role of organization? To prevent the occurrence of the what are the banned by Visakha guidelines and Prevention of Sexual Harassment Act, that is 2013. First, second, to adopt and implement a zero tolerance sexual harassment. कंपनी में आपको नोटिस बोर्ड पे और इन दैट पर्टिकुलर इंडक्शन करते हैं उसमें बताना रहता है. To train employee on zero tolerance policy and provide the employees with anti-sexual harassment training session once in every 2 years. Generally cases में, if you want, every 6 महीने भी कर सकते हैं with the policy. Right? To investigate all complaints of sexual harassment and give disciplinary punishment to the harasser. कंपनी में आईसीसी है और हम तो है ही है एचआर, तो इन दैट केस एचआर भी इसको सीरियसली लेके उस पर काम कर सकते हैं, उसको पनिशमेंट दिलवा सकते हैं. प्लस पॉइंट्स फॉर ऑल. नेक्स्ट वन important, that what action we can take against the respondent. Right? Written apology, छोटे मोटे केसेस हैं. वार्निंग, स्कोल्डिंग, withholding of promotion, withholding of pay rise or increments, terminating from the service, and undergoing a counseling session or carrying out the community service. ये सब हम कर सकते हैं. Why? Because हमारे पास कोई राइट नहीं. एज एन एचआर, एज एन मैनेजर, एज ए सीईओ, जो भी है, हम यहाँ तक ही लिमिटेड है. मतलब कंपनी में हम लोग हैं ना, तो हम उसको कोई मैक्सिमम हम लोग कंपनी से निकाल सकते. दैट्स इट. If female, that aggrieved woman wants, she can file a complaint in local police, and next, so on. Right? About this respondent. And last one that ma'am told, it's all about the female aggrieved woman. There is no any law for the man. Right? उन्हीं से होता है सब. In India, the legislation talks only about the sexual harassment and rape of the woman. There is no any law that protects males from harassment and rape. कुछ केसेस आपने देखे होंगे शायद. Under Indian law, there is only one section, that is 377 of IPC, that protects the man from harassment. अभी तक इसके रिलेटेड पर्टिकुलर कोई एक्ट या लॉ नहीं आया जिसके अकॉर्डिंग कोई कंप्लेन हो सके. सो बहुत टाइम से ये चल रहा है, but right now main important that was Sexual Harassment Act. Okay, and lastly, just a minute. One example that फर्स्ट, एयर इंडिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है. एयर इंडिया सस्पेंड्स ऑफिसर हु फेस फेक अब्यूज केस. जो गोल्ड स्मगलिंग केस में अक्यूज थे, दैट वाज अपना सुरेश, वो सस्पेंड किए गए कंपनी से बिकॉज ऑफ दिस फेक केस. तो ऐसे भी आपके सामने आएंगे. राइट? 90% केसेस ट्रू होंगे, करेक्ट होंगे, बट सम केसेस as we all know. So please note. Second good example that I already told about Me Too. Right? In 2018, that was started by actress Tanushi Datta, right, against the Nana Patekar of the sexual harassment. In the film, that was Horn of Iblis. And what are the final treatment? Right? As we all know about the
Nirbhaya case. So justice is there, but ma'am has already told that we need to speak up, right? Nirbhaya case के जो 4 victim थे, that was Mukesh, Pawan, Vinay and Akshay. काफी टाइम के बाद, आफ्टर 7 years, 2012 के बाद में लास्ट, अभी 7 साल के बाद, अभी जस्ट लॉकडाउन के एक दिन पहले, जनता कर्फ्यू के एक दिन पहले, सॉरी 20 मार्च को उनको फांसी दी गई. So this was all about the legal aspects. There are many more, so you can now ask into